खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता देते हैं। आज सदन में आपको बताते चले, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आज सदन में बजट को लेकर के चर्चा की जाएगी। 6 दिन की छुट्टी के बाद फिर से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। 16 मार्च तक बजट पर होगी चर्चा। 22 मार्च को होगा सत्र का समापन। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 6 दिन के अवकाश के बाद आज फिर से शुरू हो रहा है। सदन में 14 मार्च से 16 मार्च तक प्रदेश के नए वित्तीय बजट पर चर्चा होगी। बजट को पढ़ने के लिए सभी विधायकों को 9 मार्च से 13 मार्च तक का समय दिया गया था, क्योंकि विधायकों की ये मांग रहती है कि बजट पेश होने के दिन वो उस पर व्यापक चर्चा नहीं कर पाते। आपको बता दें कि हरियाणा में नए बजट में मनोहर सरकार ने 1000 नई नर्सरियां खोलने की घोषणा की थी। साथ ही 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट देने की घोषणा भी की है, लेकिन ये घोषणा पिछले बजट सत्र में ही की गई थी। SYL के मुद्दे पर 2,45,000 रुपए करोड़ से ज्यादा के कर्ज, किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। और सीधे आपको ले चलते हैं सदन, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। बजट को लेकर के चर्चा की जाएगी। Philosophy, notable being the project of the history of Indian science, philosophy and culture conceived by him, which crossed 120 volumes. He was also the recipient of Padma Vibhushan in the year 2009. Professor Chattopadhyay ji represented the state of West Bengal in this house for 2 terms, 1962 to 1975. 1969 to 75, and from 1975 to July 1981, he served as a Minister of State holding portfolios of health and family planning, works and housing, and commerce, and as a Minister of Commerce, the Union Council of Ministers from 1971 to 77. Sri Chattopadhyay ji also served as a member of the West Bengal Legislative Assembly from 1987 to 1990, and also as the Governor of the state of Rajasthan from 1990 to 1991. In the passing of Professor D.P. Chattopadhyay, the country has lost an eminent academician, an acclaimed philosopher, and an able administrator, and a distinguished parliamentarian. Sri Edrapati Venkatrao Garu passed away on the 28th of February 2022 at the age of 102 years. Born in December 1919 at Bodapadu village in Guntur district of Andhra Pradesh, Sri Edrapati Venkatrao Garu was educated at the AC College Guntur and the Law College Chennai. An agriculturist, Sri Venkatrao he worked as assiduously for the upliftment of weaker sections of the society and development of agriculture. He served as the director of Karshak Parishad in Andhra Pradesh, 1987, as the chairman of Jaza Parishad Guntur from 1995 to 98. Sri Venkatrao Garu also served as the founder chairman of Sangam Cooperative Dairy, Guntur. Sri Venkatrao ji started his legislative career as a member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly and served that assembly from 1967 to 1983. He also served as a minister holding portfolios of agriculture and law in the government of Andhra Pradesh and as the chairman of Andhra Pradesh Industrial Development Corporation. Sri Edrapati Venkatrao Garu represented the state of Andhra Pradesh in this August House from 1998 to April 2004. He also served as the chairman of the Committee on Papers Laid on the Table from May 2002 to May 2002. 2000 to May 2002. In the passing away of Sri Edrapati Venkatrao Garu, the country has lost a competent administrator, a champion of the rights of the farmers, and an able parliamentarian. He was hale and healthy up to 2 months before his departure, 102 years. We deeply mourn the passing away of Sri Nabin Chandra Burgoyne, Sri Rahul Bajaj, Professor D.P. Chattopadhyay ji, and Sri Edrapati Venkatrao. I request members to raise in their place and observe a silence as a mark of respect to the memory of the departed. Developments with regard to Indian students.
Honourable members, with the waning of the third wave of COVID-19, both the House of Parliament have returned to sitting from 11 a.m. during this part as against in two shifts during the first part of this session. We will need to be careful, and hence some of the honourable members are being seated in the galleries of the House, though I don't see anybody today in the galleries. I urge upon all of you to follow COVID protocol, appropriate behavior both within and outside the House. I am happy to inform you that the Secretariat has recently installed another safety measure in the chambers of this August House to contain the spread of coronavirus. Equipment has been installed to contain the spread of virus through ultraviolet C-band radiation, which is very effective in killing the virus. CSIR and CSIO has come out with this technology. I wish all of you to have a happy, meaningful session. Honourable members, during the first leg of the budget session of our House, I had accepted the request of Parliament Affairs Minister for permitting the Ministers of State in the Minister of Parliament Affairs to lay all the papers listed under the heading "Papers to be laid on the table" in the list of business for the day in the name of other ministers on their behalf due to limited functional time available and the special seating arrangements. However, now the situation has improved and the members would be sitting in Rajya Sabha chamber at galleries only, and the House will also function as per its normal sitting from 11 a.m. to 6 p.m. during this remaining part of the current session. Therefore, all the papers listed under the heading "Papers to be laid on the table" will now be laid by the individual ministers concerned. This has to be noted by all the ministers, and Parliamentary Affairs Minister, I hope, will guide them. Honourable members, regarding attendance in meetings of the Department Standing Committee, a couple of chairmen met me today and expressed concern over inadequate attendance in the committee that deal with specialized and technical issues. This calls for the need to nominate members on committees based on their background and interest in subject domain. I have flagged these issues at the time of constitution of the committees. Attending meetings should be given priority by the members. Elections are important, I do agree, but attending committees meetings need to be given due priority. Papers to be laid on the table. General Retired V.K. Singh ji. Sir, with your permission, I rise to lay papers on the table of the House, as mentioned against my name at serial number 1 in the revised list of business for today. These pertain to the GSRs on drone rules, the annual report and audit of Rohini Heliport Limited, and the Airport Authority of India. Sri Danve Rao Sahib Dada Rao. सभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित कामकाज सदन के पटल पर रख रहा हूं। श्री कौशल किशोर। मैं महोदय जी आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री अजय भट्ट। Honorable Speaker, sir, Chairman. with your permission, Hello. I rise to lay Honorable the member. Honorable Chairman. Sorry, sir. Sorry, sir. You are in Lok Sabha, are you? Yes, sorry, sir. Sorry, Assembly. sir. Sorry. So sorry, sir. Ma, please. I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 4 of today's revised list of business. Thank you. Sri John Barla. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 5 में उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। Reports of the Department Head Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. Sri Anand Sharma. Sir, with your kind permission, I rise to present the following 2 reports in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. First, 238th report on demand for grants for the year
2022-23 of the Ministry of Home Affairs. Second, 239th report on demand for grants, the years 2022-23 of the Ministry of Donor. Reports of the Department Head Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, Sri T.G. Venkatesh. Respected Chairman, sir, I rise to present the following reports in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. 314th report on demands for grants 2022-23 of Ministry of Civil Aviation. 315th report on demands for grants 2022-23 of Ministry of Culture. 316th report on demands for grants 22-23 of Ministry of Ports, Shipping and Waterways. 317th report on demands for grants 22-23 of Ministry of Road Transport and Highways. 318th report on demands for grants 22-23 of Ministry of Tourism. Thank you, sir. T.J. Venkatesh will be setting a record of submitting number of reports. Each session, a report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Railways, Professor Manoj Kumar Jha. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a copy of the 11th report in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Railways on demands for grants 2022-23 of the Ministry of Railways. Thank you, sir. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment, Srimati Jarna Das Vaidya. Thank you, Honorable Chairman, sir. With your kind permission, I rise to lay on the table a copy of the 30th report in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment on demand for grants 2022-23 pertaining to the Ministry of Tribal Affairs. Thank you. Thank you. Motion for election to the Committee on Public Accounts. Sri V. Muralidharan to move a motion for election of 7 members to the Committee on Public Accounts. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 6वां दिन दोपहर 2 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज सदन में बजट पर होगी चर्चा। 16 मार्च तक बजट पर चर्चा की जाएगी। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। दोपहर 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज सदन में बजट पर होगी चर्चा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 6वां दिन दोपहर 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। अवैध माइनिंग पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। सीएम मनोहर लाल ने रविवार को पंचकुला में द कश्मीर फाइल्स की फिल्म को थिएटर पर देखा और साथ ही साथ उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ की है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें। साथ ही फिल्म में किरदार निभा रहे अनुपम खेर सहित सभी एक्टर्स की तारीफ की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सभी एक्टर्स ने अच्छी एक्टिंग की है। देखकर लगता है जैसे कि सब रियलिटी में हो रहा हो। और क्या कुछ सीएम ने कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। देखिए, जिस प्रकार का एक सारी स्टोरी है वो केवल हमारे टैक्स फ्री करने से ही लोग उसमें उत्साही है या उसमें लोगों की जो उत्सुकता बनी है वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्स फ्री करने से आम जन बड़ी संख्या में ज्यादा संख्या में इस ट्रेजिक स्टोरी को देखे और मन में एक देश के प्रेम का जो जागरण सब मन में होना चाहिए तो उसका एक लाभ सुनिश्चित से होगा ही। इसलिए मुख्य मना के लिए देखिए अनुपम खेर का अनुभव जो किरदार है या जो यंग फेलो दर्शन कुमार बहुत ही अच्छा किरदार उन्होंने निभाया है। और वैसे तो जिस प्रकार के किरदार बाकी भी लोगों ने निभाए हैं उसमें बहुत रियलिटी है और उसमें सजीव उत्पन्न है कि किस प्रकार से सारी परिस्थितियों को और कैसे दिखाया जाए, बताया जाए, उसको एक्सप्रेस किया जाए। काफी जीवंत सारी किरदार
यमुनानगर में दुकानों में बिक रहा होली का जो सामान है वो भारत के ही अलग अलग इलाकों से तैयार किया जाता है। दुकानदारों और व्यापारियों का कहना है कि उन्हें इस बार चाइनीज रंग नहीं मंगवाना है, ना ही चाइनीज होली से संबंधित चाइनीज सामान मंगवाना है, बल्कि भारत में ही बने सारी तरीके की होली से संबंधित सामान और रंग रखे हैं। प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल की अपील की है और इसका असर भी नजर आने लगा है। इससे करोड़ों की राशि जो विदेशों में जाती थी भारत में रहेगी, इससे भारत में खुशहाली बढ़ेगी। तो यमुनानगर में दुकानों पर बिक रहा होली का सामान भारत में ही अलग अलग इलाकों में तैयार हुआ है। दुकानदारों और व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने इस बार चाइनीज रंग नहीं मंगवाए, ना ही चाइनीज होली से संबंधित चाइनीज सामान मंगवाया है। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।